Hello students, welcome to Science and Tech Updates with Dr. Vivek Rana. Topic for today's discussion is continuation of theme which we were discussing in our last class lecture. So we were covering the nuclear energy as a theme, and we all know nuclear energy has dual purposes. So in this lecture, we will be decoding a specific theme which is important from both pre-cum mains point of view. So, and even the current situation also demands a fair amount of discussion on the given topic. So, we'll be decoding India's nuclear doctrine today. So, in India's nuclear doctrine today, we will be decoding what are the main specific clauses of India's nuclear doctrine, and we see the ongoing India-Pak, you could say, tension has escalated more than what was required, and we have seen in last couple of days S400T dominating headlines. So in this lecture, our main focus would be to develop a fair amount of, you could say, clarity. What exactly is the background under which we created this policy and how it has worked in favor of India in geopolitics as well as from technical, you could say, purposes. So first of all, when we look back at India's nuclear doctrine, first thing which we need to be absolutely clear about is that what was the background, when did India decided to go bold in terms of nuclear energy. So history is testimony to the fact that India always wanted a peaceful nuclear program. Our peaceful program was conceptualized by Homi Jahangir Baba in 1948 during the Atomic Energy Commission phase, and then once the department was created, India took a lead. In Asia, it was the first country to start, you could say, the nuclear research reactor. It was named Apsara, and Apsara became the first research reactor in Asia to attain criticality at Trombay bomb. Now, coming to the operational part, we can say in 1967, Tarapur Atomic Power Station, which is popularly known as TAPS, started commercial operation as well. So, in this background, we can say that India finally mastered the art of, you could say, generating nuclear energy for peaceful purpose. So these basic themes we had covered in our class lecture as well. Now the weapon journey was little subdued, and we all know in 1968 nuclear non-proliferation treaty came into the picture. And in that treaty, it was clearly mentioned that only 5 nations who had tested nuclear weapons before were officially recognized as the nuclear states, because they felt that these are the countries who can shoulder the burden of handling the world peace, even though their history has been quite dubious, because we all know in World War One and Two, more or less these were the nations which were involved in the warfare. So basically, as per India's version, we can say this treaty is quite non-discriminatory. It, on basis of a particular year, it has decided have and have-nots of nuclear energy. In 1974, India finally decided that it would conduct the nuclear weapon test, and we all know in 1974 it was code named Operation Smiling Buddha. In Operation Smiling Buddha in Pokhran, Rajasthan, we successfully conducted the first nuclear test and announced to the world that India is now ready to harness nuclear energy for dual purpose, not only the peaceful program, which was it had already mastered in the stage one, but also the weaponry part as well. So basically, we can say in 1974, India, this bold move was, even though was criticized globally because it was not according to international parlance. But if you look back at history, we already had major wars with China in 1962, with Pakistan 65, and in 71, we all know the Bangladesh issue. So it was quite pertinent that we cannot afford the next war without nuclear weapons. So it was in national sovereignty interest that we decided to conduct that nuclear weapon test. And further, this test was consolidated in 1998 during, you can say, Atal Bihari Vajpayee tenure, and we conducted the Pokhran 2 test, which was code named Operation Shakti, because in real context, India became a powerful nation and tried to shed the image of a soft power.
So overall, we can say these code names holds quite significance from historical point of view. Operation Smiling Buddha was code name Smiling Buddha because it was the Buddha Purnima. So we can say that we had operational readiness, or you could say blessings of the god during that you could say technical experiment. And in operation, you could say you could say Shakti, that the main had a symbolic, you could say, reference to power. And this mission has, it is not to be confused with the, you could say, Mission Shakti, because Operation Shakti was a nuclear weapon test at Pokhran. Mission Shakti represents India's foray into, you could say, anti-satellite weapon technology. In 2019, March 27, India successfully conducted a SAT test and became the fourth country to have this sophisticated technology to even attack the remote sensing or Earth observation satellites of the enemy. So we can say India has sufficient, you could say, arsenal in its armory, and it can be used strategically depending upon the time of, you could say, escalation. So basically, with the first slide, I have just tried to bring back the historical perspective into the picture. Now, once we had mastered the art of nuclear weapon, the second step is to have a sufficient ballistic missiles which could carry such nuclear warheads to, you could say, a longer distance. So as you could see on your screen, we have tried to compare India and Pakistan, because currently we can see the conflict is on at a stage where you will see certain missiles being, you could say, showcased, or you could say articulated more or less whenever Pakistan is highlighting that it is a nuclear capable state. So if you look at the series of Pakistan, these are the ranges we have demonstrated. Their most, you could say, efficient or the long distance missile happens to be Shaheen 3, which is around 2,750 kilometers. Then Abdil, Shaheen, Gauri, these all are the missiles which are capable of 2000 range, which are in our parlance classified as intermediate range ballistic missiles. Coming to India's part, India traditionally under IGM-DP wanted to develop short and intermediate range missiles. Prithvi series, Agni were modeled on this format, but currently with Agni 5 we entered into, you could say, the ICBM group. That missile is capable of roughly hitting 5,000 to 7,500 kilometers. Already India is in process of developing Agni 6, which has a range of almost 10,000 kilometers, but that is in experimental stages. So from a present perspective, we can say the Agni 5 is the main arsenal which can be used for decisive strategic purpose. For tactical purposes, Prithvi 1, 2, 3, even the, you could say, recently developed missiles can be handy, and even Agni 3 and 4 are also sufficient to strike any part of Pakistan if situation demands. Now, when you are going through this topic, make sure your defense lecture is up to date. You are thorough with your classification of missiles. What exactly are the ballistic missiles? What are cruise missiles? Because currently we can say BrahMos, Shaurya, and as well as you could say Scalp missile, which is an air-to-surface missile, were in headlines of late. So make sure you just revise your classification lecture as well, because it will help you in linking the things in the current perspective. And generally there is a trend in UPSC, whenever such themes are in news, they tend to formulate a statement based question on that theme, and generally the statements revolve around on their range, on their classification part, and if they are developed with the help of some foreign nation, like in case of BrahMos it is the Russia, in case of Iraq, it is the Israel. So make sure you have a clear clarity. Even though the current missiles which we are discussing at the moment, Prithvi, Agni, they happen to be totally indigenous version of weaponry, and India has once again showcased its you could say confidence in developing such advanced technology on its own. Now coming to the main topic where we left yesterday, because our last topic we were discussing the pros and cons of nuclear energy, and we have developed your mindset regarding whether India should pursue nuclear energy for peaceful purpose on the war front, or it should just focus on renewables, because we see renewables have also a bright future in coming time. Both solar, wind, biofuels have immense future to take on India leads. But if you want to rise as a main science and tech power in terms of energy metrics,
nuclear energy continues to be a reliable and efficient source which can be harnessed to in this, especially in this transition period, because India had already made bold commitments under Paris Agreement to be net zero by 2070. So in that background, nuclear energy is a theme which you must undergo, and also you should be clear about the emerging topics like the concept of fusion, and also about the, you could say, criticality of the nuclear chain reaction, and also the small modular reactor theme. Now, in this current theme, India's nuclear doctrine, we'll be focusing on the main clauses of the doctrine, and we will try to decode what exactly are pros and cons of each and every one clause. So, if you are going through current affairs, you must be familiar. The main clause which dominates this doctrine is the no first use policy. So I will try to keep this lecture in bilingual form so that some of the students who are even trying to make notes, because this topic we are mainly covering from the class lectures point of view, so that there is absolute clarity. So it will be a dual language, you could say, particular theme. So first I will read the English statement, then I will try to decipher in the larger context of the theme. Now the statement goes: a posture of no first use. Nuclear weapons will only be used in retaliation against nuclear attack on Indian territory or on Indian forces anywhere. देखिए, अब स्टेटमेंट में आपके काफी हद तक उन्होंने आपके क्लैरिफाई किया है कि इंडिया कभी भी फर्स्ट अग्रेसर नहीं बनेगा। इंडिया हमेशा आपके, जब भी आपके कोई काउंटर ऑफेंसिव होगा, इंडिया उसके कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करेगा। इससे आपके क्रेडेंशियल्स में एक पीसफुल, आपके रिस्पॉन्सिबल स्टेट यू कुड की झलक आपकी दिखती है। और इसमें हमने काफी हद तक क्लैरिफाई किया है कि जब भी ऐसा कोई अटैक होगा, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो इंडियन पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी में हो। जैसे हम कहते हैं कि हमारे किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो, जैसे भी आप देखोगे कहीं बॉर्डरिंग स्टेट पे शेलिंग चल रही है, अगर मान लो कोई पाकिस्तान ऐसा मिस एडवेंचर करता है जिसमें एक स्मॉल वॉरहेड को वो आपके डिलीवर करे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये थीम आपके एक्टिवेट हो जाए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि मान ली कोई इंडियन फोर्स है, वो आउट ऑफ शोर्स फंक्शन कर रही है, और स्पेसिफिकली कोई एनिमी स्टेट आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को या किसी आप डिस्प्यूटेड आइलैंड या सी में है और वहां पे वो आपको स्पेसिफिक टारगेट कर देती है, तो मतलब ये नहीं कि वो मिलिट्री टाइप एक कॉम्बैट है। उसमें काफी हद तक देखा जाएगा कि वो जो अटैक है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में आपके पूरे नेशन के अगेंस्ट उसको अटैक को आपके कंसीडर किया जाएगा। तो इसका मतलब काफी हद तक ये देखने में थोड़ा सा वीक क्लॉज जरूर लग रहा है, पर टेक्निकली ये काफी एक मेजर क्लॉज है जिसमें हम आप कह सकते हैं कि हमने सफिशिएंट सेफगार्ड्स रखे हैं। तभी आप देखिए कितनी लॉन्ग हिस्ट्री में 70 से लेके हम 2025 में पहुंच गए, कभी भी किसी कंट्री ने ऐसा कोई मिस एडवेंचर नहीं किया है कि इंडिया की माइट को वो टेक ऑन करने की कोशिश करे। तो बहुत बार आप देखोगे पाकिस्तान भी ऐसा न्यूक्लियर ब्लफ करता है कि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, हम जब सिचुएशन डिमांड करेगी उसको यूज करेंगे। पर आपको ऐसे स्टेटमेंट से पैनिक नहीं करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में ये डॉक्ट्रिन काफी हद तक उस चीज के लिए आपके सफिशिएंट ग्राउंड प्रिपेयर करे। तो देखने में जरूर ये थोड़ी वीक सी डॉक्ट्रिन लगती है कि आप क्यों ऐसी वेट कर रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है जितनी भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं वो क्लियरली इस डॉक्ट्रिन की इस पर्टिकुलर क्लॉज को रिटर्न में कहीं पे आपके फॉलो नहीं आपके करती हैं, और काफी हद तक वो हेजिटेट नहीं करती हैं ऐसे आपके न्यूक्लियर वेपन्स को किसी वीक कंट्री को इंटिमिडेट करने के लिए। जैसे आपके फैक्ट्स के साथ भी अगर हम इसको देखें, देखिए अभी करंटली कुछ नेशंस हैं जिन्होंने इम्प्लिसिट वे में इस क्लॉज को अपनी डॉक्ट्रिन में शोकेस कर रखा है, जिसमें से हमने टॉप पे इंडिया को ही दिखा रखा है। चाइना का भी ऑलमोस्ट एक कैच वाला पॉइंट है कि अगर यूएसए ताइवान को स्ट्राइक कर देता है तब हम आपके अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर हमें भी न्यूक्लियर अटैक आपके करना है, वरना नॉर्थ कोरिया, यूएसएसआर ऐसी कंट्रीज में ये इम्प्लिसिट वे में कंसीडर किया जाता है। जबकि जहां पे क्लियरली ऐसा कोई मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये कंट्रीज काफी हद तक अपनी माइट को जब स्ट्रेटेजिक सिचुएशन डिमांड करेगी उसको रिस्पॉन्सिबल में यूज करने के लिए डायरेक्ट रेडी रहते हैं। उसमें रिमेनिंग जितने भी पावरफुल नेशंस हैं वो करंट टाइम्स में आ जाते हैं, जिसमें आप देखोगे P5 का डोमिनेंस दिख जाता है, यूएसए, रशिया, फ्रांस और यूके। और पाकिस्तान, इजराइल ने भी ऐसा कुछ आपके मॉरल ग्राउंड्स वाला क्लॉज इंसर्ट नहीं कर रखा है।
तो उस एंगल से कई बार देखिए, कई आपके क्रिटिक्स होते हैं, वो कहते हैं कि आपको मॉडर्न टाइम्स में ना आपके थोड़ा सा आपके टेक्निकली रेडी रहना चाहिए, आप ऐसा गांधीयन टाइप पीसफुल सा क्लॉज आप क्यों रख के बैठे हैं, आप थोड़ा हार्ड स्टेट की तरह इंटरनेशनल फोरम पे आप इमर्ज कीजिए। तो इसकी वजह से ये हमेशा जो इंडिया की पॉलिसी का सबसे कंट्रोवर्शियल क्लॉज है वो आपके ये नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन वाला आपके रहता है। तो इसकी वजह से आपको एक ओपिनियन बिल्ड करना है। वैसे आप देखिए ये आपके नो फर्स्ट यूज वाला जो क्लॉज है इसने हमें इतने ईयर्स तक डिकेड से सर्व किया है और इससे हमारी ना ग्लोबल रेपुटेशन रिस्पॉन्सिबल स्टेट की बनी रहती है और काफी हद तक एक हेल्दी आप ये कुछ इकोसिस्टम में आपकी रेपुटेशन काफी लॉर्ड भी की जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड पीस कॉन्टेक्स्ट से ये क्लॉज हमारे फेवर में ही वर्क कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली हमने जब से एनपीटी साइन नहीं की थी काफी लोगों को एक माइंड में सस्पिशन हुआ था कि इंडिया की लॉन्ग टर्म इंटेंशंस क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी टेरिटरी को एक्वायर करना चाहते हैं या किसी कंट्री का पार्ट को वो आपके एनेक्स आपके करेंगे। पर वैसे आपने देखा ट्रेडिशनली इंडिया की हिस्ट्री ऐसी चीजों में कभी भी आपके लिंक नहीं की गई। तो इसका मतलब ये क्लॉज देखने में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम वीक जरूर अपीयर होता है, पर अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कीम में देखें ये हमारे फेवर में ही आपके वर्क कर रहा है। सो वी कैन से फॉर द टाइम बीइंग that there is no necessary amendment is required in no first use. Even if you want to you say amend it, then there should be sufficient, you could say, logical argument in favor of your amendment so that you could defend your points articulately. There should not be you could say imaginative or subjective rejection of no first use clause just by your instincts. Coming to the second major clause, the second major clause is quite straightforward and somehow we can say it covers up the first clause which was appearing in superficial way. The second clause clearly states in strong words, nuclear retaliation to first strike will be massive and designed to inflict unacceptable damage. Now you can say these words are quite in strong context. They are clearly saying if any country tries some misadventure with Indian, you could say military or civilian, you could say cantonment, they try to send some warhead which is of minimal capacity but is of nuclear nature, then our response is not going to be similar one that we will try to look out for some similar military or some you could say insurgent. We will try to inflict the unacceptable civilian damage in largest possible capacities. You can recollect the first major use of nuclear weapon happens to be the atom bomb dropping on Hiroshima and Nagasaki on 6 August and 9 August 1945 by USA. So basically in that case also you can see it was not that USA were targeting any military or specific area. It wanted to send a strong message to global that any aggressor or imperialist state has no right to take away territory. So in that context, in background, the similar you could say theme would be exercised by India in case of an emergency. So the larger message from this point is that India is not in race of nuclear weapons. It only wants to maintain a credible minimal deterrence. Basically, it will have sufficient warheads in its arsenal to defend its sovereignty and its, you could say, geostrategic interest, and mainly its main purpose to deter the enemy from any such misadventures of any nature. Because currently we can see that globally there is a wider acceptance that chemical weapons, biological weapons should not be in place. So in that background, some countries which are nuclear powers might resort to some, you could say, nuclear misadventures. So in that case, any democratic country should have sufficient weaponry in its arsenal to give a counter offensive when situation demands. ये तो हिंदी में इसका सिंपल मीनिंग कि इंडिया कभी भी फर्स्ट अग्रेसर नहीं बनेगा, पर अगर आपने ऐसा कोई मिसएडवेंचर किया तो इंडिया उसके लिए मेंटली आपके रेडी है कि वो एक अनएक्सेप्टेबल न्यूक्लियर अटैक मेन हार्टलैंड पे करने से हेजिटेट नहीं करेगा। तो इससे हम वर्ल्ड को बस अपनी एक डेटरेंस शोकेस कर रहे हैं कि आप हमें लाइटली मत लीजिए। आप हमें अगर सोच रहे हैं कि आप एक सॉफ्ट स्टेट हैं और कभी भी आप अपनी मर्जी से आप ब्लफ करके आप उसको फायदा उठा सकते हैं इंटरेस्ट के, तो अल्टीमेटली जब सिचुएशन डिमांड करेगी तो इंडिया
आपके उसको एज अ मेन स्ट्रेटेजिक वेपन यूज करने से हेजिटेट नहीं करेगा। तो इस क्लॉज की वजह से आप देखिए कि इनडायरेक्ट में हमने पहले क्लॉज से अपनी थोड़ी सी लार्ज हार्टेडनेस और जेनरस नेचर को शोकेस किया था, पर उस जेनरस और हार्ड नेचर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते या उसको आप ग्रांटेड नहीं ले सकते। जब भी सिचुएशन डिमांड होगी, इंडिया आपके एक स्ट्रांगली हिट बैक करने की क्रेडेंशियल्स रखता है। तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि ये दो क्लॉजेस को जब हम कलेक्टिवली व्यू करें तो ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन काफी एक राइट वर्डेड है और काफी हद तक हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक राइट वे में सर्व कर रही है विदाउट प्रोवोकिंग। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे पॉलिसी में कुछ अमेंड करते हैं इन पहले दो क्लॉजेस में, थोड़ा बहुत इनको मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंगली अपडेट करते हैं, तो हो सकता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे उसको थोड़ा नेगेटिवली परसीव किया जाए और इंडिया को थोड़ा विलन टाइप आपके प्रेजेंट किया जाए। तो इसकी वजह से ज्यादातर ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहती है कि हमें जो ये पहले दो क्लॉजेज हैं इनको एज इट इज पॉलिसी में विदाउट चेंज फॉलो आपके करते हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड भी आपके पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू काफी रेलेवेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर रिटेलिएटरी अटैक्स कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, तो इस पॉइंट का देखिए लॉजिक क्या है कि हमने जो ये डिसीजन है न्यूक्लियर वेपन के अटैक का वो सिविलियन लीडरशिप को ही आपके दिए। तो टेक्निकली हम पॉलिटी में देखते हैं कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है, एक अलग से आपकी कमेटी भी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो अल्टीमेटली पर आप देखेंगे कि रियल पावर आपके प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। तो जब भी हमें ये बोल्ड डिसीजन लेना होगा कि हमने न्यूक्लियर अटैक का बटन पुश करना है, तो टेक्निकली वो सिविलियन लीडरशिप के थ्रू ही एग्जीक्यूट किया जाएगा मिलिट्री मींस के डिस्कशन के बाद। कई बार हम देखते हैं कि अगर हम डायरेक्ट इसको मिलिट्री को चार्ज आपके दे देते तो कई बार वो सिचुएशन आपके ग्लोबल पीस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी एस्केलेट करने की पॉसिबिलिटी आपके रहती है। क्योंकि अगर कोई हॉट हेड टाइप मिलिट्री जनरल आ जाए ना, तो हो सकता है कि वो आपके किसी सिचुएशन में थोड़ा ओवर रिएक्ट करके इसको कई बार उसमें कहे, जैसे पाकिस्तान के केस में हमने देखा है कि बहुत बार उनकी जो लीडरशिप है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके चेंज होती रहती है। कुछ रैश डिसीजंस कई बार हमने देखा है वो अपने लार्जर पॉलिटिकल टसल्स के लिए वो आपके कर लेते हैं, जो काफी हद तक पूरे नेशन के लिए कई बार बैकफायर कर सकते हैं। जबकि इंडिया की हिस्ट्री काफी ऑपोजिट है। इंडिया में हमेशा सिविलियन लीडरशिप ने डोमिनेट किया है, टेन्योर सभी लीडर्स के कंप्लीट हुए हैं और यहाँ की जो मिलिट्री माइट है वो सबसे वेल डिसिप्लिन है। और काफी हद तक आप करंट स्ट्राइक्स में भी देखें तो उन्होंने काफी रिस्ट्रेंट और कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स आपके किया। तो काफी हद तक हमने उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस डिसीजन लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए ले रखा है कि हम जब भी ऐसा डिसीजन लेंगे वो एक कलेक्टिव डिसीजन आपके जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी के थ्रू सिविलियन लीडरशिप के थ्रू आपके एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें बाकी प्लेयर्स का कंसेंसस होगा, पर फाइनल डिसीजन एक आपके सिविलियन हेड का ही रहेगा। तो इसलिए आपको जब भी वैसा प्री टाइप क्वेश्चन बनाए कि हु विल टेक द डिसीजन, सीडीएस, पीएम, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ये क्लॉज उसमें रोल प्ले। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे भी काफी डिबेट होती है। फोर्थ क्लॉज जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें कई लोगों का मानना है कि आपने फिर से थोड़ा सा ओवर जेनरस सी स्टेटमेंट को आपने इंसर्ट कर रखा है, जिसकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस नहीं है मॉडर्न टाइम्स में। आपके इस क्लॉज को ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है कि नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि आप सिर्फ जो पावरफुल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जब वो फर्स्ट अग्रेसर बनते हैं तभी आप न्यूक्लियर वेपन की ऑप्शन को आप ओपन करेंगे। अगर कोई वीक सा नेशन है जिसकी डिफेंस आप कह सकते हैं कि मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंगली अभी वो न्यूक्लियर इक्विप्ड नहीं है, तो आप ऐसे वीक नेशन को कभी भी बुली आप नहीं करेंगे। तो टेक्निकली जैसे आप देखते हैं कई बार बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ कुछ माइनर स्क्विर्मिशेस आपके जब चलती हैं तो वो दोनों ही नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो कभी भी आप देखेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट के थ्रू भी, हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन को ऐसे आप माइट नहीं शोकेस करते और ना ही हम उनको इंटिमिडेट कर रहे। तो काफी हद तक कई लोग कहते हैं कि जब आपके वो आपके जेनरस नेचर का ग्रांटेड ले रहे हो तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए अपनी रियल स्ट्रेटेजिक माइट को दिखाने के लिए और उनको कंप्लायंस के लिए कई बार ऐसे क्लॉजेस को हमें अमेंड कर देना चाहिए। पर वैसे अगर हम लार्जर पिक्चर में देखें तो इंडिया की जो क्रेडेंशियल्स रहे हैं वो हमेशा से ये रहे हैं कि जो बैटल्स होती हैं वो इक्वल्स के बीच में होनी चाहिए और
काफी हद तक किसी वीक कंट्री को हमें कभी भी ऐसे वो बुली नहीं आपके करना चाहिए। तो सिंपल टर्म्स में इस क्लॉज में जब भी वो ओनली वर्ड लगा दिए तब आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है प्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है कि हम किसी भी सिचुएशन में कभी भी XYZ कंट्री के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे अगर वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो इसमें अब आपके कैच क्या है कि कई बार इस क्लॉज को हम फॉलो लेटर ऑफ स्पिरिट में नहीं करेंगे। वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है? एक सिचुएशन तो देखो हाइपोथेटिकल है कि कोई नेशन किसी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ टाई अप कर लेती है और वो वेपन्स को प्रोक्योर करके इंडिया के अगेंस्ट यूज करने का ऐसा डिसीजन लेती है। तो टेक्निकली उसमें कहा जाता है कि वो उसकी थ्रेटिकल पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि इस टाइम पे वर्ल्ड में जितनी भी आपके मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं उन्होंने एनपीटी साइन कर रखी है, जिसके अकॉर्डिंगली P5 नेशंस को भी मैंडेट किया गया कि आपने न्यूक्लियर वेपन्स को किसी थर्ड कंट्री को विदाउट परमिशन आपके नहीं आपके वो ना टू डायरेक्टली उनको हेल्प करनी है बनाने में, ना उनको डायरेक्ट सेल आपने करने हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में अगर वो ट्रीटी होल्ड करती है मॉडर्न टाइम्स में, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी कम है कि P5 में से कोई इतना इरिस्पॉन्सिबली बिहेव करे कि वो अपने किसी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए एक थर्ड कंट्री को न्यूक्लियर आर्सेनल आपके सप्लाई कर दे, क्योंकि उससे वो इंडायरेक्ट में उनके क्रेडेंशियल्स पे भी होगा और वो ट्रीटी का इंडायरेक्ट में वायलेशन माना जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो फिर देखिए थ्योरेटिकली हम भी फिर हेजिटेट नहीं करेंगे, उस कंट्री को इंडायरेक्ट में माना जाएगा कि उस ब्रीफ पीरियड के लिए वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह बिहेव कर रही है। उस क्लॉज के लिए तो देखिए बैकअप आपके है। पर यहाँ पे हमने उस क्लॉज को डायरेक्टली वर्डेड में नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि जब भी कोई वीक कंट्री चाहे वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं हो और वो कोशिश करे कि बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर कोई आपके अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे आपके सिविलियन पॉपुलेशन पे या फिर कोई मिलिट्री आपके विंग हो जो स्टेशन हो कहीं और पे वहां पे, तो वहां पे फिर इनडायरेक्ट वे में हमने अपने डोर्स ओपन रखे हैं कि हम हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम हम ये नहीं वेट कर सकते कि हम भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बनाएं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बेस्ट वेपन्स हैं जो अग्नि पृथ्वी अभी हम बात कर रहे थे, वो हम हेजिटेट नहीं करेंगे एनिमी स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग काउंटर ऑफेंसिव एज अ मेजर डेमोन्स्ट्रेट करने की। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि इंडिया ने अपने इसी देखने में पॉइंट थोड़ा सा वीक जरूर लग रहा था, पर हमने सफिशिएंट सेफगार्ड्स रखे जिससे मॉडर्न टाइम्स में कोई भी कंट्री सिमिलर मिसएडवेंचर्स पे बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर भी रेयरली आपके ऐसी चीज में आपकी इंडल्ज करेगी। तो इंग्लिश में इसको सिंपल टर्म्स में रीड कर रहा हूँ। इट सेज हाउएवर इन द इवेंट ऑफ a major attack against India or on Indian forces anywhere by biological or chemical weapons, India will retain the option of retaliating with nuclear weapons. So you can say India has sufficient safeguards in this clause too, and the conventional sense says that we should try to ideally continue with this clause as well in long term future with sufficient safeguards, because any you could say downgrading or amendment in this clause as well is going to be counterproductive in long run and may just create unnecessary fear mongering at international sphere, or it might some people might misread this situation and try to just highlight that India is going quite aggressive and it's trying to be the first proponent of, you could say, or breaking the peace accords at international level. So for the time being, we can say this clause is also having sufficient safeguards to exercise restraint, but when the situation demands, we are ready for a strong counteroffensive through nuclear weapons as the situation demands. So we can say the silence at times could be a powerful weapon, but this silence should not be taken as a sign of a weakness or cowardliness. Now coming to the final clause of nuclear doctrine, which is once again important from pre-mains point of view. It says continued commitment to the goal of nuclear weapon free world through global, verifiable, non-discriminatory nuclear disarmament. So under this clause, we can say that we are trying to hit the rock bottom and we are saying that India is in favor of, you could say, a peaceful agreement under which all nations agree for nuclear disarmament. It should not be that you are preaching
that you are responsible nations and other nation could be mischievous or could not handle power responsibly. So technically, in a, you could say, in weird way, we are attacking the, you could say, nuclear non-proliferation treaty, because that treaty has in a direct or indirect way highlighted that five nations are the responsible nuclear states, and nations which have developed after that treaty are still not recognized as nuclear states. So basically, India, Pakistan, Israel, and are the countries which did not sign this treaty on the first ground and not even ratified it. North Korea is an outlaw which signed and ratified that treaty but later boycotted and withdrew. So we can say under this that India also believes in world peace and is a strong harbinger of it as well, and it's ready to disarm its nuclear weapon, but only on one condition: if all five P5 nations or all nations of the world come collectively to disarm these dangerous, you could say, scientific intervention, which is at times considered both boon and a bane, because we have seen the countries which harness nuclear energy have emerged as the world powers since 1940s, and the countries which were quite, you could say, pessimistic or didn't know what either to pursue the journey of this nuclear adventure or not, have been not able to replicate that power in geostrategic makeup as of now. So basically, we can say that this is a quite a strong, you could say, statement, once again clearly highlighting India's real intentions of credible minimal deterrence, because India wants that world should act and try to make world a safer place, because it's not that the world has not tried. If you look back in IR dimension, there have been two major attempts which can be directly linked to this theme. There has been a SALT treaty, strategic arms limitation treaty between, you could say, USSR and USA, and then in modern times also the START 1 and START 2 were dominated headlines, under which USA Russia agreed to reduce nuclear warheads considerably and end that cold era, you could say, mad race for stockpiling maximum nuclear weapons. Even though a lot of people believe that both these measures were more symbolic in nature, because currently they are leading, you could say, in the race of nuclear warhead, and they have sufficient warheads to bomb the entire world. But nevertheless, India has never been interested in such rat races. As you could see, currently our stockpile is more or less on a reasonable number of around 180, and which is sufficient to make any enemy deter at the first place. At the same time, we are not trying to use nuclear energy solely for weaponry purpose, as we can see in case of North Korea, in which it has rarely harnessed nuclear energy for peaceful purpose, but more or less has been in a mad arm race to showcase its might in the world. And similar is the story with the Pakistan. So we can say that there are different examples which some of them articulate strongly, some of them try to bend the rules as per their convenience. But more or less, we can say India's journey has been quite a successful one in terms of nuclear parlance. We would not only master the peaceful art of, you could say, generating nuclear energy, but also we made strides in nuclear weapon with successful Pokhran test, and created a more or less a strategic doctrine which serves India's purpose in, you could say, difficult testing times, and more or less in peaceful times presents ourselves as a responsible democratic nation which developing world as well as developed world looks firmly. As we could see in the current ongoing conflict as well, we have got sufficient international support, and more or less world is looking upon us as a responsible nation. And so far as of now, our attacks have been quite, you could say, non-escalatory nature, and we have specifically targeted, you could say, terrorists or so-called the military areas only. Civilians were never the first the target, nor is our intention. So hopefully through this lecture you got a fair idea what exactly are the main clauses or features of India's nuclear doctrine. So to summarize, we can say it's the main keyword is the no first use. We will never be the first aggressor. The second point says that we are aiming for just credible minimal deterrence. Our nuclear retaliatory attack to the first strike would be massive and would be of difficult to emulate in any scale if situation demands. So basically, we have tried to
end the rules as per the our situation. The third one says the control for nuclear command would always be with the civilian political leadership, because that's what democracies are all about in real sense. And then we will never use this power to intimidate or bully a non-nuclear weapon state. So basically, we have clearly worded that this nuclear attack is reserved only for nuclear states. Any non-nuclear weapon state should not be intimidated by this acquisition of strategic weapons like Agni 5 or the ones which are under construction. And finally, that India also believes in world peace and is not in any arms nuclear race. If world formulates a policy in which all nations agree to nuclear disarm themselves, then India would not hesitate to shed its nuclear weapons and would be ready to disarm itself. But then that's you can see the Western hypocrisy gets exposed. Rarely they would agree for such dream arrangements. So we can say more or less the continued status quo will continue in geopolitics. The nations which have invested their time, energy, effort in developing such sophisticated weapons are likely to maintain their dominance in international affairs. And rarely we will come across a leader who would be so saintly that he will dismantle all the nuclear warheads of his country in larger peace purpose. So we can say at times we have to be quite realistic in our, you could say, international decisions. And India has so far tried to balance these with a selected, you could say, adding its arsenal, at the same time maintaining healthy relations with the different diplomatic countries. So if you are having any specific doubt which you feel has not been addressed in this basic, you could say, value addition lecture, online lecture, you can ask them. Otherwise, once the classes resume offline, we will have a clear discussion once again on this particular theme, so that you have clear objectivity on the topic and you are in position to attempt any memes or pre-question if at all it comes from this particular theme. So hopefully our next, you could say, session would be on offline one, and hopefully the better sense prevails among world leaders as well as, you could say, the countries, and life it should resume as normalcy should be the norm, not an exception. Thank you very much. Have a nice day.